Hello everyone. Today we are going to talk about the Member of Parliament Local Area Development Scheme. This scheme has been asked very consciously when it came in 2019 attempt, 2020, even in 2017. So that is why it becomes really important to study MP LATs. MP LATs को पढ़ना काफी important है. Continuously they have been asking questions because in news you must have studied about MP LAT scheme that they are trying to poach some amounts which is allotted to the MP LATs. करप्शन चल रहा है MP LAT के लिए, जो अमाउंट अलॉट किया जाता है उसको उसकी धांधलेबाजी हो रही है, उसको गलत तरीके से यूज किया जा रहा है, यूज ही नहीं किया जा रहा, अनयूज पड़ा है. So all these problems or all these criticisms related to MP LATs made us wonder what this scheme actually is and how it is being used right now to boost up the funding against COVID-19, and also what is it, who manages it, and how it is used. All these pointers are important too for you to know, because see, you also have your MP and MLAs of your area, right? So you should know about MP LAT scheme. आपको पता होना चाहिए MP MLAs हमारे areas में होते हैं. So as an informed citizen, we should know about them. So let's start studying about the MP LATs. The class PDF will be uploaded on our Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease. You can download the notes from there directly. Okay, let's begin. So MP LAT has been suspended for 2 years. MP LATs में जो फंड्स डाले जाते हैं अभी 2 साल तक नहीं डाले जाएंगे. क्यों? ताकि कोविड-19 की फंडिंग के लिए जो पैसा चाहिए वो हमें मिल सके. कोविड-19 के अगेंस्ट, इसकी फाइट के अगेंस्ट जो फंडिंग में पैसा चाहिए वो हमें मिल सके. So what is MP LATs? It's a central sector scheme. First thing that you should know about MP LAT is central sector scheme. And another point for MP LAT you should know is fully funded by Government of India. That is obvious because it's a central sector scheme. It will be funded by Government of India. These are the 2 pointers that you have to remember. ये पहले 2 pointers हैं जो prelims के लिए आपको याद रखना है. First is central sector scheme. Second, fully funded by government. And the annual, that is salana, yearly MP LAT fund entitlement per MP, underline per MP constituency is INR 5 crore. यानी कि पर MP पर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो MP LAT की फंडिंग दी जाती है वो है 5 करोड़. सालाना जो दी जाती है वो 5 करोड़ है. ओके, नाउ इट इनेबल्स द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बिकॉज द नेम ऑफ द स्कीम इट हैज MP इन इट. MP मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. सो इट इनेबल्स the member of parliament, underline this, इसको बॉक्स बना लो. It enables member of parliament to recommend works of development nature with focus on the creation of durable community asset based on locally felt needs to be taken up in their constituencies. For example, you are an MP of your constituency. You think that in your area there is a requirement of parks for the senior citizens and for the kids, right? You also feel that the roads should be constructed properly or managed or maintained properly in your area, or you feel that there should be an Anganwadi in your area, or you feel that there should be proper water facility in your area. Okay, for all these development works, these are development works. For all these works you require funding. आपको क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है ना, as an MP. So this particular scheme will enable the member of parliament to recommend works of development nature. You will recommend to the government that these are the works that should be done or completed in my area. Accordingly, you will be given the funding, and using that funding you can complete these activities in your area. Okay, so recommendation of works. Who recommends the work? First, Lok Sabha members, they can recommend work within their constituencies. Elected members of Rajya Sabha can recommend works within the state of election, and nominated members of both Rajya Sabha and Lok Sabha can recommend works anywhere in the country. तो अगर लोक सभा मेंबर हो आप तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर ही आप कोई भी काम करवा सकते हो, ये कंस्ट्रक्शन या एक्टिविटी रिलेटेड. अगर आप राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर हो, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड मेंबर हो, तो आप अपने स्टेट, जिस स्टेट में इलेक्शन हुआ है उस स्टेट में करवा सकते हो काम. पर अगर आप राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ही नॉमिनेटेड मेंबर हो, प्रेसिडेंट ने आपको नॉमिनेट किया है, राइट, तो आप कंट्री में कहीं भी, देश में कहीं भी, कोई भी जगह काम करवा सकते हो डेवलपमेंट नेचर का काम. ओके, point is clear. So first point for prelims we studied that it's a central sector scheme funded by Government of India. Second point we studied yearly INR 5 crore rupees is given to per MP constituency. Third thing we studied the recommendation for works. Okay.
Before we move forward, here's a small announcement for all of you. Unacademy is starting new batches for UPSC CSE aspirants from 30th June. These batches will be for 2021, 22 and 23 aspirants. For 2021 aspirants, we have the Phoenix Revision batch. For 2022 aspirants, we have the 1-year batch course, and it is available in different languages according to your preference. For 2023 UPSC CSE aspirants, we have a 2-year batch course, and we also have an NCERT batch. Now you can get discount of 10% if you use the code ARPITA10. Okay, अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आपको 10% का ना डिस्काउंट भी मिलेगा. So hurry up, subscribe now. The links are given below in the description box. Make sure that you join these batches before 30th June. Now, when we talk about an elected MP, they can also contribute MP-LAT funds outside that state or union territory. एक elected MP होता है ना, member of parliament, वो अपने state या union territory के बाहर या अंदर दोनों जगह काम फंड्स को यूज कर सकता है. बट देयर विल बी अ लिमिट. ऐसे यूसेज पे लिमिट होगा. वो होगा मैक्सिमम 25 लाख का इन अ फाइनेंशियल ईयर. तो 25 लाख ही कंट्रीब्यूट कर सकता है डेवलपमेंट के लिए, अगर उसे अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर कोई डेवलपमेंट वर्क करवाना है. एंड द डेवलपमेंट ऑफ एरियाज इनहैबिटेड बाय द SCs एंड STs, दे आर आल्सो कवर्ड अंडर द MP-LAT स्कीम. फॉर दैट द MPs हैव टू रिकमेंड, इसके लिए MPs को क्या करना है, दे हैव टू रिकमेंड एटलीस्ट 15% ऑफ MP-LAT फंड्स फॉर एरियाज विच आर इनहैबिटेड बाय SC and 7.5% for areas inhabited by शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन हर साल. अगर मान लीजिए कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स वहां पर रहती हैं और डेवलपमेंट काम करवाना है, तो MP 15% MP-LAT का फंड यूज कर सकता है उस एरिया में जहां पर शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं, और 7.5% ऑफ द फंड यूज कर सकता है जहां पर शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं. एंड इन केस ऑफ इनसफिशिएंट ट्राइबल पॉपुलेशन, यानी कि अगर पॉपुलेशन कम है इन एरिया ऑफ लोकसभा मेंबर, देन दे मे रिकमेंड दिस अमाउंट फॉर क्रिएशन ऑफ कम्युनिटी एसेट इन द ट्राइबल एरियाज. ओके, आउटसाइड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी. मान लीजिए आप MP हैं, यू आर एन MP एंड इन योर एरिया द ट्राइबल कम्युनिटी पॉपुलेशन इज वेरी less. So the surplus fund that is left, you can use them in development works outside your jurisdiction also. In case a state does not have a scheduled tribe inhabited areas, then this amount may be used in SC inhabited areas and vice versa. Okay, मान लीजिए SC inhabited लोग आपके एरिया में नहीं है, एरिया नहीं है, तो आप scheduled tribes के लिए यूज कर सकते हो. ठीक है. Now, what if there is a natural disaster in an area of an MP, any kind of calamity? Then also it can be implemented in areas prone to affected by the calamity. Now, in the case of calamity of severe nature in any part of the country, an MP can recommend developmental activity or work up to maximum ₹1 crore for the affected district. मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में MP के काफी ज्यादा घोर सीवियर कैलामिटी आ जाती है, उस केस में MP 1 करोड़ तक का अमाउंट यूज कर सकता है डेवलपमेंट या रिहैबिलिटेशन एक्टिविटी के लिए. बट द नेचर ऑफ और द सिवियरिटी ऑफ दिस कैलामिटी विल बी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली. ओके. Now, when we talk about the non-lapsable funds which are released to the district authority by the government of India are non-lapsable. Government of India district authority को ये MP-LAT के फंड रिलीज करती है और ये non-lapsable होते हैं. ठीक है, यानी कि अगर सरप्लस बचे हैं तो उसको और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यूज किया जाएगा. ये non-lapsable, बीच में इसको अवॉइड नहीं किया जाएगा. And the funds left in the district or which are not released by government of India, they can be carried forward to be used in the next upcoming year. Okay. So this was all about what is Member of Parliament Local Area Development Scheme. I hope you enjoyed this lecture series and I hope you understood MP-LAT scheme properly. Now you are in a position to answer any question that appears in prelims related to the scheme.